So good evening. Today it's 9th October 2023 and here is Mangesh Borkar sir, Director Sambodhi Career Academy, Thane West, Mumbai region. So we are continuing our discussion on economy with respect to NDA and NA examination, right? So last session we discussed cash reserve ratio, CRR. Then we discussed cheap money. Okay, and then few other terminologies also. In detail, we discuss what is budget, what is capital budget, what is revenue budget, what is fiscal deficit, what is primary deficit. Okay, so many important terminologies with respect to your NDA examination we have discussed. After discussing these small important concepts, we shall also go for questions which were asked by UPSC, NDA, UPSC in NDA and NA examination. Okay, since the examination is conducted by Union Public Service Commission as a commission, so NDA and NA examinations are also difficult. Okay, so that's why I am taking whatever I am telling you, whatever I am teaching you with respect to general studies topics. So I am taking into detail. Okay, now rest of the things with respect to this portion. Okay, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं. हमने लास्ट टाइम चीप मनी के बारे में डिस्कशन किया था, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में डिस्कशन किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके बारे में रेगुलरली पढ़ते हो, राइट? ठीक है. नेक्स्ट इज consumer price index. Okay, next term is consumer price index. You must have heard this definition. Consumer price index. Okay. Yeah. So what is consumer price index? Another name for the consumer price index is cost of living index. Okay, write down consumer price index and oblique करो cost of living index or retail price index. Retail price index. Okay, so for all three, there is one combined definition. So consumer price index, cost of living index, and retail price index. So what do you understand with respect to these terms: consumer price, cost of living, and then retail price index? What do you understand with respect to with these words? Consumer price index means what? Consumer means what? Consumer means what? Customer. Huh? Customer. Yeah, consumer means customer. Okay. So consumer means customer. So this index is associated with consumer means customer. Customer का price index है वो. Okay. This is the index of customer, consumer. Cost of living index. What is your understanding with this term? Cost of living. Cost of living index. अगर हम ट्रांसलेशन भी करते हैं हिंदी मराठी में तो क्या होगा इसका? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स.
means what? Cost of living index means what? Cost of living index. अरे cost of living means what? Cost of living. Cost of living means what? जो आप लोगों को रहने के लिए, है ना, रहने के लिए मतलब जीने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग कहेंगे. जस्ट एक सिंपल लिस्ट. एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल? रिटेल प्राइस इंडेक्स. रिटेल मीन्स व्हाट? Anybody? Anybody who is having knowledge about retail? What is retail? Hmm? अरे all of you are there? सगळे आहात का तिथे? Yes, sir. हाँ. So retail means what? When we talk about retail, so retail means what? सेलिंग प्राइस. हाँ, मतलब सेलिंग प्राइस. जब जैसे आपके दुकानदार होते हैं तो वो रिटेलर्स होते हैं. अब रिटेलर्स को जो सप्लाई करने वाले होते हैं वो होलसेलर्स होते हैं. सो वन इज होलसेलर and another is retailer. Okay, so retailers are small shopkeepers. Okay. और ये लोग सपोज 30 रुपीज की कोई वस्तु है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 30 रुपीज है, तो डेफिनेटली फॉर प्रॉफिट मेकिंग व्हेन दिस कमोडिटी कम्स इनटू मार्केट, तो इसकी जो प्राइस है ये 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है. 10 रुपए की जो चीज होती है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए 10 रुपए ही लगता है, वो मार्केट में फिर 10 रुपए में नहीं बिकती, वो 50-60 रुपए में भी बिक सकती है. क्योंकि ये प्रोड्यूसर से डीलर तक जाती है और डीलर से रिटेलर तक जाती है. उसमें भी और छोटे रिटेलर्स भी हो सकते हैं. तो हर एक का प्रॉफिट होता है. ओके, सो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, लेकिन ये समझ लो सिर्फ. ओके. Now, see definition. Write down definition. This index measures changes in price level. This index measures changes in price level. This index measures changes in price level. It tells us how much more price, how much more price has to be paid. It tells us how much more price has to be paid for the commodity. It tells us how much more price has to be paid for the commodity by the consumer
tells us how much more price has to be paid for the commodity by the consumer in the current year. In the current year, as compared to the base year, as compared to the base year. Okay, suppose देखो अभी 2000 है. Okay, 2000 है. 2000 में in 2000 suppose price of sugar, हाँ, रिटेल मार्केट में सपोज ₹10 था पर केजी. ओके, और 2020 में या 23 में ये जो प्राइस है ये ₹40 केजी हो गया. ₹40 पर केजी. तो 2000 में आपको कितना देना पड़ रहा था? ₹10. अब 2023 में कितना देना पड़ रहा है? ₹40. So how much is the fluctuation? How much is the fluctuation of ₹30? Okay, means in 2000 you paid ₹10 and in 2023 you are paying ₹40. So ₹30 more you are paying. So you can consider this is the base year and this is the current year. What extra you are paying in the current year. So base year is important factor in consumer price index. समझलं सगळ्यांना? Yes. All of you. सर मध्ये तुमचा आवाज ब्रेक होत होता. प्रोजेक्ट वन. हॅलो, येतोय आवाज? आवाज येतोय का? Yes, sir. हाँ. So basically consumer price index is related to this thing. Like in 2000 the price was different, okay, and in 2023 the price is different. Okay, so that specific difference is consumer price index. Okay, so through this you will get consumer price index. Okay, so this is about consumer price index. Okay, next is corporation tax. Next is corporation tax. Okay, next is corporation tax. Okay, आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? Yes, sir. हाँ, next is corporation tax. Next is corporation tax. It is a tax on company's profit. It is a tax on company profit. चलो आज मी तुम्हाला लिहूनच देतो, मग थोडं डिस्कस करू. It is a tax on company's profit. It is a tax on company's profit. It is a direct tax. It is a direct tax. It is a direct tax which is calculated
It is a direct tax which is calculated on profits. It is a direct tax which is calculated on investment. सर आवाज ब्रेक होतोय. काय break? आवाज तर यायला पाहिजे. काय ब्रेक होतोय का? हॅलो, येस सर, थोडा थोडा मध्ये मध्ये तुला जातोय. येतोय? आता आता येतोय आवाज? आता येतोय? येस हो सर. सर. हम्म. ओके. हा, सो काय लिहिलं मी? काय सांगितलं? इट इज अ डायरेक्ट टॅक्स which is calculated on profits after interest payments and allowance so it is a direct tax which is calculated on profits after interest payments and allowance. Okay, so interest payments means interest is given. Suppose company is there and company is giving interest. Okay, व्याज देते आणि अलाउन्स देते लोकांना वगैरे, भत्ता वगैरे देते. ते सगळं जाऊन जो काही प्रॉफिट येतो कंपनीचा, ओके, त्याच्यावरती जो टॅक्स लागतो दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉर्पोरेशन टॅक्स. ओके, सो इट इज अ टॅक्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट राईट डाऊन. कस्टम ड्युटी. नेक्स्ट इज कस्टम ड्युटी. आता येतोय आवाज माझा व्यवस्थित? यस. Yes, sir. हा, custom duty. Okay, it is a duty. Custom duty. It is a duty. It is a duty that is imposed on products. That is imposed on products received from exporting nations of the world. Received from exporting nations of the world. It is also called as protective duty. It is also called as protective duty. Protective duty. As it protects the home industries. As it protects the home industries. Okay, so custom duty means what? Basically, what is custom duty? So custom duty मध्ये काय असतं ना की तुमचा देश आहे, in your country
These are other countries, right? These are other countries. These are other countries. So what is happening in your country? Other countries are sending their commodities. So 1, 2, 3, 4. 4 countries है. This is your country, India, that is भारत. इसमें ये इनका माल आ रहा है. ओके, तो ये जो माल आता है, आपको पता होगा कि देयर इज अ डिपार्टमेंट विच इज कॉल्ड एज कस्टम्स एंड एक्साइज, राइट? तो ये जो कस्टम्स वाले होते हैं, व्हाट दे डू, ये यहाँ पे आपके आपके देश में जो बाहर का जो माल आता है, तो उस माल पे, कमोडिटीज पे, गुड्स पे ड्यूटीज लगती है. ओके, ड्यूटीज लगती है. क्यों लगती है ड्यूटीज? Why our government is imposing, every government is imposing duties on the import from different nations. क्यों लगती है ड्यूटी? जैसे अभी देखो, आप मार्केट में जाओगे तो दे विल टेल यू, शॉपकीपर्स, कि ये इंपोर्टेड है ना, ये जो है 2-3 चीजें, ये बाबा इंपोर्टेड है. ओके, तो इंपोर्टेड है तो उसका प्राइस ज्यादा होता है. कुछ चीजें ऐसी होती कि उनका प्राइस ज्यादा होता है. ओके, so what is the reason why the custom duty is levied on the imported items or those items which are exported from the other countries to your countries? जो बाहर से एक्सपोर्ट आ रहा है आपके देश में, वो बाहर से आपके देश में आ रहा है, तो आपके देश में जब आता है तो उसे इंपोर्ट करेंगे, कहेंगे. when other क्योंकि जो मैसेज है, एवरीबडी विल नॉट टेक, एवरीबडी विल नॉट परचेस, ओनली अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल परचेस. ठीक है, हाँ, ओके. तो आपका जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट है उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए. ओके, और हमारे देश को रेवेन्यू भी जनरेट होना चाहिए. तो 2-3 उसके उद्देश्य होते हैं. तो दिस इज कस्टम ड्यूटी. राइट डाउन डियर मनी, डियर मनी, डियर मनी. Yeah, so dear money, write down. It is that money, it is that money which can only be borrowed it is that money which can only be borrowed at a high rate of interest. It is that money which can only be borrowed at a high rate of interest. ओके, सो डियर मनी क्या होती है कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई होता है. ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई है तो वो मनी जो है, जैसे आप कर्जा लेने जा रहे हो और आपको कर्जा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो वो सस्ता रहेगा कर्जा लेना कि महंगा रहेगा आपके लिए? इज इट एक्सपेंसिव और नॉट एक्सपेंसिव? Not expensive. हाँ, Not expensive. अरे बाबा, आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, तो एक्सपेंसिव नहीं रहेगा क्यों? बैंक से आप पैसा ले रहे हो ज्यादा इंटरेस्ट रेट से, तो फिर वो हाई, वो महंगा रहेगा ना कर्जा, कर्जा लेना. हम्म. Yes, sir. या सो
डियर मनी, देखो चीप मनी हमने देखा था, तो चीप मनी कम इस पे अवेलेबल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन डियर मनी क्या है? डियर मतलब ये महंगा होता है, कर्जा लेना महंगा होता है, तो बोरोविंग इज एक्सपेंसिव, बोरोविंग बिकम्स expensive. Okay, so write down is that money which can only be borrowed at a high rate of interest. So borrowing become expensive. So borrowing becomes expensive. So borrowing becomes expensive. In सर आवाज ब्रेक होतोय. अरे यार, आवाज कसं काय ब्रेक होतोय माझा? आवाज नाही ब्रेक व्हायला पाहिजे. सर इथे लिहिलंय येतोय का येत आहे आवाज? की तुमचं नेटवर्क बँडविड्थ लो आहे. हा, हॅलो. इकडे लिहिलंय की तुमचा नेटवर्क बँडविड्थ लो आहे. आता येतोय? हॅलो हॅलो. येतोय सर, येतोय आता. हा, आता येतोय आवाज? हॅलो. हो सर. हा, राईट हो डाऊन सर, नेक्स्ट. येतोय येतोय. डिसेंट्रलायझेशन. डिसेंट्रलायझेशन. इन दैट राइट डाउन उसका इन हिंदी इट इज विकेंद्रीकरण. विकेंद्रीकरण. ओके, राइट डाउन. It is or it means, we can say it means establishment of various unit. It means establishment of various units in the same industry, of the same industry. Establishment of various units of the same industry at different places. Okay, झालं decentralization. येस सर. Then write down deficit financing. Deficit financing. डेफिसिट फायनान्सिंग. आवाज येतो ना आता व्यवस्थित? येस सर, येतोय. Yes, sir. Deficit financing, it is a practice. It is a practice of modern government
It is a practice of modern government. It is a practice of modern government for spending more money or spending more money than it receives in revenue. Than it receives in revenue. It means what? काय होतं नेमकं? Already मी डिस्कस केलेलं आहे की what happened in our budget. We are having revenue at one side and expenditure at another side. Okay, so our revenue is 1 rupees, but we are spending 2 rupees. Okay, so deficit financing means ये जो एक्स्ट्रा 1 रुपया है इसको खड़ा करना. तो खड़ा कैसे करेंगे हम? डेफिसिट फाइनेंसिंग से. ओके, डेफिसिट फाइनेंसिंग. सो डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे? फिर उसके लिए हम कर्जा लेंगे, अदर सोर्सेस है, इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस, उसको हम यूज करेंगे. ठीक है, सो दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. ओके, अब बस डेफिनेशन याद में रखो. ओके, कीप इन माइंड डेफिनेशन. देन राइट डाउन deflation. 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 In that write down, it is the reverse. It is the reverse case of inflation. It is the reverse case of. It is the reverse case of inflation. It is the reverse case of inflation in which the prices of commodities and services काय सांगितलं तुम्हाला मी? The prices of commodities and services. हा, it is काय? पूर्ण वाक्य सांग. What I have mentioned. Deflation, it is the opposite of inflation, in which the prices of commodities and services. हा, prices of commodities and services are falling म्हणजे पडणे. FALLING. Prices of commodities and services are falling. 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 When the output of goods and services, when the output of goods and services increase, more rapidly than the volume of money in the economy. Than the volume of money in the economy. Than the volume of money in the economy.
So now see what happened in deflation. Deflation. मला एक सांगा की why there is, why sometimes in market we can see less prices of goods and services, and sometimes we see that the price level is high. So less price level, high price level. When high price level, it is called as inflation. When less price level, it is called as deflation. तो ऐसा क्यों होता है? Because of demand. या सो डिमांड तो है, लेकिन अभी डिमांड है तो प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा? अभी डिमांड है, ठीक है, डिमांड है, लेकिन डिमांड के साथ एक और वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। है, डिमांड तो है, मार्केट में डिमांड बहुत है, लेकिन फिर डिमांड है, लेकिन सपोज अभी डिमांड है एंड सप्लाई नेगेटिव है, डिमांड है एंड सप्लाई पॉजिटिव है ना? डिमांड है, सप्लाई पॉजिटिव है, डिमांड है, सप्लाई नेगेटिव है। सपोज 100 गुड्स की डिमांड है और सप्लाई 70 ही हो रहा है, तो प्राइसेस कम होगी कि बड़ी होगी? बढ़ेगी। डिमांड 100 का है, सप्लाई 70 का हो रहा है, प्राइसेस कम होंगी कि बढ़ जाएंगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। अभी डिमांड आपकी 100 की है, लेकिन सप्लाई 130 का हो रहा है, 140 का हो रहा है, प्राइसेस बढ़ जाएंगी कि कम होगी? कम होगी। कम होगी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना, देखो सबसे अनस्टेबल जो मार्केट है वो है एग्रीकल्चर लोगों का, एग्रीकल्चरिस्ट। कभी हम देखते हैं कि टमाटर का भाव 80 रुपए किलो हो रहा है, और कभी हम देखते हैं कि टमाटर 10 रुपए में भी कोई खरीद नहीं रहा है, कि नहीं? ये एग्रीकल्चर में बहुत इम्पैक्ट रहता है। कभी हम देखते हैं कि ऑनियन जो है, ऑनियन ऑनियन वो लोग 20 रुपए में, चलो 20 रुपए भाव चल रहा है, कभी हम देखते हैं कि 150-200 रुपए पार हो गया ऑनियन, ठीक है। अभी देखो, अभी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ेंगी, चीजें बहुत बढ़ जाएंगी। अभी आपको और काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, हम रेगुलरली यू कैन एक्सपीरियंस दिस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, okay, on the international market, national market also you can see these changes. So supply बढ़ गया, काफी सारा देखो इंक्रीज हो गया, लाइक आउटपुट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल, यू पीपल वांट, आपको बाहर जाना है, आपको बाहर जाना है घूमने के लिए, अभी दिवाली आएंगी तो छुट्टियों में लोग जाते हैं, एंड यू आर हायरिंग टैक्सीज। अब अभी दिवाली के टाइम पे ऐसा है कि काफी सारे लोग घूमने जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी ऐसी रहेगी कि जो टैक्सीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो गणेश चतुर्थी हुई, तो गणेश चतुर्थी में जो कोंकण रीजन में जाने वाले जो लोग थे, उन लोगों को अगर इफ दे वांटेड टू गो टू रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग रीजन, सो नॉर्मल जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे जो 500 रुपए थे, तो ट्रैवलिंग लोगों ने क्या किया, ट्रैवल वालों ने क्या किया, ट्रैवल वालों ने they started charging 2,000-2,500 rupees instead of 500 rupees. तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी मतलब these are very simple examples, and these are very simple examples in our own life कि हम लोग ये देखते रहते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बसें खाली जाती है, कोई नहीं जाता है, नॉर्मल टाइम्स में कोई नहीं जाता है, ओके, लेकिन जब सीजन्स रहते हैं तो लोग जाते हैं। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग कि जब सप्लाई बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी डिमांड क्या है कि सप्लाई बहुत बढ़ गया है ना। डिमांड जो थी वो तो स्टेबल है, लेकिन सप्लाई बहुत बढ़ गया, सप्लाई इतना बढ़ गया कि उसको आपको उसकी प्राइस को आपको कम करने की नौबत आ गई। ओके, सो यू हैव
decrease, like market, the market forces, they decided to decrease or to minimize the price of a commodity or service. Okay. उसके उसके व्यतिरिक्त मतलब in another another cases we can see that ki if the demand is high, is less, so inflation will be there. Inflation means what? कि prices जो है वो आपकी बढ़ जाती है. तो I hope you understood this theory of demand and supply. Okay? समझलं सगळ्यांना? समझलं सगळ्यांना? Hello? Yes or no? Yes, sir. हाँ, चलो. So this is about deflation. These are all like practice this thing. Okay, like these are all of you experience these things in your life. Okay. Then write down devaluation. Again, this is very important term. Devaluation. Devaluation. Okay, the loss of, write down the loss of value of a currency. The loss of value of a currency of a country. The loss of value of a currency of a country relative to other foreign currency. The loss of value of a currency of a country relative to other foreign currency is known as devaluation. Devaluation. याला आपण मराठीत म्हणतो किंवा हिंदीत म्हणतो अवमूल्यन. अवमूल्यन. Okay. Devaluation, the loss of value of a currency of a country related to other foreign currency is known as devaluation. In this process, government deliberately means muddam. In this process, government deliberately cheapens, मतलब गवर्नमेंट अपने एक्सचेंज वैल्यू को जानबूझ के कम करता है. Devaluation is a process in which government deliberately cheapens the exchange value of its own currency. The exchange value of its own currency in terms of other currency, by giving it a lower exchange value. By giving it a lower exchange value.
Okay. It is used for improving. It is used for improving. It is used for improving balance of payment situation. It is used for improving balance of payment situation in the country. It is used for improving balance of payment situation in the country. Okay, so devaluation काय असतं? रुपयाचं अवमूल्यन. तुम्हाला माहित आहे का आता what is the value of $1 with respect to Indian rupees? Sir, 80 80 rupees. rupees. 83 rupees. 83 rupees. 82.79. 82.79. ओके चलो ठीक है. सो 83 पकड़ लो. किसकी सिचुएशन मजबूत है, डॉलर की रुपए की? Dollar, sir. डॉलरची मजबूत आहे. ओके. पण आता भारतात अनेक लोक असे आहेत की त्यांना हे समजतच नाही. ओके. त्यांना वाटतं की अरे इधर तो 83 दिख रहा है, इधर $1 दिख रहा है. So they don't understand कि what is this exchange वगैरह वगैरह. Okay. And in our country we have so many lakhs and crores of blind followers of our politicians, our great politicians. So they fail to understand this economics. है ना? उनको वो महंगाई रहेंगी तो भी वो सह लेते हैं. उनको लगता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं. मार्केटिंग वाला सब कुछ मार्केटिंग है आज की डेट में. सरकार की तिजोरी कितनी खाली है और कितना लोगों की लूट चल रही है. So the people of India, they fail to understand this economics because they are not understanding these kind of things. Even you must not be aware about how the politicians are looting our country, how they are, वो आपकी जेबें कैसे खाली कर रहे हैं आपको ही नहीं समझ में आ रहा है. Okay, because we don't have knowledge of economics. And ये foreign exchange, international market, ये तो कॉमन आदमी के बस की बात नहीं है. राइट. वो बेचारे, उनको थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का डोज पिला दिया उनको तो वो चुप हो जाते हैं. नई डेफिनेशंस आई है हमारे मार्केट में देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की. सरकार के खिलाफ अगर बोलोगे तो आप राष्ट्रद्रोही हो, देशद्रोही हो. सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज भी करोगे, गलत नीतियों को, तो भी आपको उठा के अंदर डाल देते हैं. है ना? तो ऐसे दौर में हम लोग अभी चल रहे हैं फिलहाल. ओके. सो वी फेल टू अंडरस्टैंड दिस डिवैल्यूएशन. रुपया कमजोर है कि मजबूत है, कि हमारे भारत के बिलियनियर्स, करोड़ों लोगों को समझ में नहीं आता. ओके. सो एनीवे, डिवैल्यूएशन या अभी लाइक फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दिस इज सफिशिएंट फॉर यू. जस्ट मीनिंग भी पता होना बहुत बड़ी बात होगी. ठीक है. देन राइट डाउन नेक्स्ट, डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन. देखो यहाँ पे लगा डिस और ए इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस बढ़ना, कमोडिटीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ना, उसको लगा है डिस. राइट डाउन. इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ disinflation. It refers to a process of bringing down prices. It refers to a process of bringing down prices moderately
moderately from their high level, moderately from their high level without any adverse impact on without any adverse impact on without any adverse impact on production and employment. Without any adverse impact on production and employment. Okay, so disinflation म्हणजे काय की bringing down prices moderately from their high level without any adverse impact on production and employment. Okay, okay, so it means कि हम what we do, we bring down the prices from their higher level, है ना. जैसे 100 रुपया अगर किसी चीज का हो गया है तो हम क्या करते हैं कि इसको इमीडिएटली 100 में से हम 90 पे तो नहीं ला सकते, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, इसको 99 पे लाएंगे, 97 पे लाएंगे, 95 पे लाएंगे, 94 पे लाएंगे, ऐसे करके सो मॉडरेटली वी आर मिनिमाइजिंग दैट प्राइस लेवल. ओके, हाँ, सो मॉडरेटली मतलब धीरे धीरे उसको कम कर रहे हैं. एंड वाइल डूइंग दिस we need to consider the production and employment also, है ना. तो जो इसका कुछ एडवर्स इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग उसको कम करते हैं. ठीक है, सो राइट डाउन disinflation is an anti-inflationary. Disinflation is an anti-inflationary. Anti-inflationary means जो महंगाई बढ़ती है उसके खिलाफ. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई. Disinflation is an anti-inflationary measure. Anti-inflationary measure. Then write down dividend. Next term is dividend. Dividend. It is the amount. It is the amount which company distributes to shareholders. It is the amount which company distributes to shareholders
It is the amount which the company distributes to shareholders when the profits of company when the profits of company are calculated by the board of directors. Okay, so dividend is the amount which company distributes to shareholders when the profits of company are calculated by board of directors. Okay, so जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन शेयर होल्डर्स को कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसके प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा देता है. Okay, so that is called as dividend. Okay, so dividend is the amount which the company distributes to shareholders when the profits of the company are calculated by the board of directors. Okay, so dividend. So in last time we discussed, there is a public sector company, private company, public sector company, and in there is a public limited company. Okay, private limited company and public company, public limited company. Okay, so the public sector companies, that is government companies, can be public limited, and the private companies are also like can be public limited. So जो भी public limited companies होती है, in public limited companies में PIO आता है. Okay, like not PIO, क्या बोलते हैं, IPO आता है. Sorry. Okay, IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. तो शेयर्स इशू होते हैं, शेयर्स हम लोग खरीदते हैं, हजारों 100 शेयर्स, 200 शेयर्स, 500 शेयर्स, 1000 शेयर्स आप लोग खरीदते हो. एंड व्हेन द कंपनी इज गेटिंग बेनिफिट और द प्रॉफिट, ओके, सो दे आर शेयरिंग दैट प्रॉफिट विद यू. ओके, सो वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड जाता है. ओके, सो इट इज अमाउंट which is distributed by the company to the shareholders when the board of directors is calculating that profit. Okay, then write down double option. Next, write down double option. Double option. It means, write down, it means granting of both rights of buying it means granting of both rights of buying and selling. It means granting of both rights of buying and selling of security or share. It means granting of both rights of buying and selling of security or share to the shareholder during a given period at given time. It means granting of both rights of buying and selling of security or share to the shareholder during a given period at given time. Then write down excise duty. Excise duty.
excise duty. It is a tax. Excise duty. I don't. It is a tax. Which is imposed. It is a tax which is imposed on certain indigenous production. It is a tax which is imposed on certain indigenous production. It is a tax which is imposed on certain indigenous production like petroleum products, comma, cigarettes, etc. Or you can take liquor also. Liquor म्हणजे दारू वगैरे जे असते, liquor, etc. of the country. Of the country. Okay, of the country. Of the country. Of the country. Okay. Okay, so excise duty, with respect to excise duty, you can keep in mind that this is a duty which is imposed on certain indigenous production like petroleum products, liquor, दारू वगैरे जे असते, cigarettes वगैरे, ओके, तंबाखू वगैरे जे असतात, ओके, ह्या याच्यावरती. So it is basically to generate revenue. ओके, दोन गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये. मोस्टली एक्साइज ड्युटी कुठल्या याच्यावरती लागते? समजा नाऊ people are doing, people are consuming more, people are consuming more liquor, दारू पीते हैं लोग, है ना, बहुत ज्यादा दारू पीते हैं. तो लोग क्या, तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर की ड्यूटीज बढ़ा देते हैं. ठीक है, सिगरेट्स पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, राइट. सो व्हाट गुटखा खाते हैं, गुटखा वगैरह. व्हाट गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट increase tax, that is excise, okay, on all these products. So अभी गवर्नमेंट को क्या लगता है कि बाबा, what is the thinking of government, कि गवर्नमेंट को लगता है कि चलो सपोज सिगरेट के दाम अगर बढ़ा देंगे हम, तो गवर्नमेंट को लगता है कि इससे दो बातें होंगी, या तो दाम बढ़ने की वजह से लोग कम स्टार्ट करेंगे, कम पीना स्टार्ट करेंगे, लोग पीना तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन कम पिएंगे. और सेकंड, फिर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होता है. जैसे सिगारेट सपोज 5 रुपए की मिलती है, तो अभी 7 रुपए की मिल रही, तो 2 रुपए बढ़ गए, या फिर 8 रुपए की मिल रही, 3 रुपए बढ़ गए. तो व्हाट विल हैपन, अ पर्सन हु इज कंज्यूमिंग 5 सिगरेट्स इन अ डे, तो 5 के बदले वो 4 करेगा, है ना. तो क्या है, भाव बढ़ने से गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो बढ़ गई, ओके, और कंजम्पशन जो है, ओके, उसका जो कंजम्पशन है वो कम हो गया. 5 के बदले 4 जा रही है ना. तंबाकू खाते हैं लोग, गुटखा खाते हैं, 10 ये खाते हैं लोग, ओके. मेनी यू मस्ट हैव सीन, लिकर पीते, दारू पीते, दिन रात पूरा का पूरा पेमेंट दारू पीने में जाता है लोगों का कई जगहों पे, ओके. या फिर वॉट एवर दे आर अर्निंग, सो दे आर इन्वेस्टिंग in consumption of liquor, okay. So there is a double agenda of government with respect to this, okay. So what we have written, yes, what you have written, काय लिहिलं तुम्ही? आवाज येतोय माझा? Excise duty. हाँ, Excise duty. नहीं, उसके
लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो यार मुझे. ठीक है, प्रोडक्शन लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सिगरेट, liquor, etc. of the country. Of the country. Okay. Yeah. Excise duty. Excise duty. Excise duty may be imposed. Excise duty may be imposed either to raise revenue. Excise duty may be imposed either to raise revenue. Or to hit him there. Or to excise duty may be imposed either to raise revenue or to check the consumption of the commodities. और टू चेक मतलब कम करना है ना, उसका वापर जो है, उसका यूज जो है कम करना. और टू चेक द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटीज ऑन विच दे आर इम्पोज्ड. On which they are imposed. Full stop. It is progressive in nature. It is progressive in nature. Okay, chalo. Then next is fertility rate. Fertility rate. Write down. It measures. Next, write down. Fertility rate. It measures the average number of. It measures the average number of it measures the average number of live births per 1,000 women. It measures the average number of live births per 1,000 women. This is one of the most important. This is one of the most important. This is one of the most important and useful aids. This is one of the most important and useful aids, AIDS aids, to population projection. This is one of the most important and useful aids to population projection. So fertility rate means average number of live births. Live births per 1,000 women. So 1,000 जो महिलाएं होती है, जो बच्चों को जन्म देती है, तो उनके कितने बच्चे, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, कितने जीवित बच्चे पैदा होते हैं. ओके, per 1,000 women. This rate is one of the most important and useful aids to population projection. So बढ़ती हुई जो आबादी होती है उसका मेजरमेंट करने के लिए ये जो fertility rate है, that is important. Okay. Then write down
fiscal policy, FISCAL, fiscal policy, fiscal policy. Okay, in that write down, it is that part of government economic policy. It is that part of government economic policy which deals with taxation. It is that part of government economic policy which deals with taxation, expenditure, taxation, expenditure, borrowing, BORROWING. It is that part of government economic policy which deals with taxation, expenditure, borrowing, 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 and the management of public debt, and the management of public debt, DEBT, public debt in the economy. Okay, so fiscal policy क्या है? It is a policy of the government, economic policy of a government, which is associated with the taxation. Tax कितने बिठाने हैं, कितने कम करने हैं, expenditure कितना खर्च करना है, कितना खर्च नहीं करना है, borrowing कितना लोन लेना है, and the management of public debt in the economy. Public debt, okay, public debt मतलब जो government जो कर्जा लेती है उसे हम public debt कहेंगे. Okay, and it is basically related to the flow of money in the economy. Fiscal policy का उद्देश्य क्या रहता है? फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य रहता है कि पैसा कितना मार्केट में, कितना पैसा आ रहा है ना, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, ठीक है, गवर्नमेंट किस किस माध्यम से पैसा खड़ा करेंगी, सो इसके लिए टैक्सेशन होता है, फिर टैक्सेस बढ़ाते हैं, है ना, कहाँ पे खर्चा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है, वगैरह वगैरह. ओके, सो राइट डाउन फर्दर. This policy is primarily related with the flow of funds in the economy. Flow of funds in the primarily associated with the flow of funds in the economy. Then write down last terminology of today's session. FOB. FOB. In that write down free on board. It means free on board. FOB means free on board. Free on board. आवाज येतोय सर्वांना व्यवस्थित? Yes. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Free on board. It means sailors beer. It means sailors मतलब जो बेचने वाला होता है. It means sailors bear all the cost of transport. Sailors bear all the cost of transport, shipping, and insurance. It means sailors bear all the cost of transport, shipping, and insurance.
मतलब जो सेलर है, जो जो माल बेच रहा है, वो क्या करता है, वो सारी की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, उस कमोडिटी का वो पे करता है, वो बियर करता है. Okay, so FOB means free on board. Sailors bear all the cost of transport, shipping, and insurance. When the FOB, when the FOB is quoted on the invoice, is quoted on the invoice. Okay. So for today's session, I stop here. I hope you are understanding the things. समझते सगळ्यांना? Yes, sir. ऋग्वेद, Yes, sir. विनायक, ओम, प्रद्युम, जिगीषा. Yes, sir. ठीक है. Okay, so say like those who haven't submitted photos and 10th mark sheet, residential proof, so they get a copy of Xerox in next classroom lecture and submit at institute. And from next week only, we are going to conduct test also. Okay, so once again, we are conducting test on English grammar, then general knowledge also. So general knowledge, you can consider general knowledge without any proper preparation. Okay, like this is like a surprising test. Okay, so I will declare the dates of test and you can take those tests online and classroom. Okay, so we are starting test. Already we conducted one test on English. Okay, पण त्याच्या व्यतिरिक्त आणखी काही इंग्लिशच्या टेस्ट घेऊ. And Nahida madam is already finishing your biology section very soon in next 3 lectures. Okay, and I am also finishing your economy, then polity, constitution we are restarting. Okay, because few things are required. Okay, so फंडामेंटल ड्यूटीज तक हम रुक गए थे, आगे के आर्टिकल्स हम लेंगे, वो भी 2-3 लेक्चर्स में. कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, फिर जनरल lecture. It is your duty to send me message on the same date. If you are missing today, so immediately on today you send me message and you ask me about link and the passcode. Okay, I have observed that few students, they don't bother, they don't like, they are not very prompt related to attending lectures, and if you miss lectures, so you are not sending me message. Okay, so hereafter at least you follow these instructions. अगर आपका किसी का लेक्चर मिस हो जाता है किसी कारणवश, तो मुझे मैसेज कीजिए, एडवांस में मैसेज कीजिए कि क्यों मैं लेक्चर मिस कर रहा हूँ, मुझे रीजन देना चाहिए. और सेकेंडली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर लेक्चर मिस होता है तो उसी दिन आप मुझे उस दिन के लिंक और पासकोड के लिए मैसेज भेजें. ओके, तो ये थोड़ा सा करना, आप लोगों को ये फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट रिजल्ट. ओके, वी वांट रिजल्ट इन coming year only, right? So follow the disciplines as a students of Sambodhi Career Academy. Okay, thank you very much. Bye for the time.